हेलो एवरीवन। आज हम सीएसआर नेट मैथमेटिक्स के सितंबर 2022 के एक सीक्वेंस के क्वेश्चन को देखेंगे। क्या सीक्वेंस दिया हुआ है कि अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस रूट फाइव बाई टू, बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस रूट फाइव बाई टू, और एक सीक्वेंस डिफाइन किया गया है एफ एन बाय अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन बाय अल्फा माइनस बीटा, और एक पॉलिनोमियल डिग्री 2 का एटमोस्ट 2 का डिफाइन किया गया है उस सीक्वेंस के टर्म्स के हिसाब से, दैट इज पी ऑफ 1 इक्वल्स टू f1, पी ऑफ 3 इक्वल्स टू f3 एंड पी ऑफ 5 इज इक्वल्स टू f5। अब क्या करेंगे, इनमें से कौन सा ट्रू होगा? अगर ये टर्म्स दिए हुए हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीक्वेंस का रेकरेंस रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, f1 इज इक्वल्स टू क्या है, अल्फा टू द पावर 1 माइनस बीटा टू द पावर 1 बाय अल्फा माइनस बीटा। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा बाय अल्फा माइनस बीटा। सो अल्फा माइनस बीटा कैंसिल होकर क्या आएगा, 1 आएगा। सो f1 जो टर्म है सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म f1 क्या आएगा, 1। सिमिलरली अब हम क्या देखेंगे, अब दिया हुआ है P3 इज इक्वल्स टू F3, तो हम F3 को देखेंगे। ओके, सिमिलरली F2 F4 ऑल सीक्वेंस के टर्म्स को देख के हम उसका रिकरेंस रिलेशन फाइंड करेंगे। तो F3 क्या आएगा, n के जगह जस्ट 3, विल पुट n इक्वल्स टू 3 अल्फा टू द पावर 3 माइनस बीटा टू द पावर 3 बाय अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर बाय अल्फा माइनस बीटा एज इट इज। अब अल्फा माइनस बीटा गॉट कैंसल्ड एंड वी आर लेफ्ट विथ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो F3 क्या आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा के जगह 1 प्लस रूट फाइव बाई टू, अल्फा बीटा के जगह 1 माइनस रूट फाइव बाई टू वी विल सब्सटीट्यूट। सो 1 प्लस रूट फाइव बाई टू का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट फाइव बाई टू इंटू 1 माइनस रूट फाइव बाई टू। ओके, एंड फाइनली बीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट फाइव बाई टू का होल स्क्वायर। इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा। ओके, सो 1 प्लस रूट फाइव बाई टू होल स्क्वायर क्या आएगा, 1 प्लस 5 प्लस टू रूट फाइव बाई फोर, एंड 1 माइनस रूट फाइव बाई टू का होल स्क्वायर 1 प्लस रूट फाइव माइनस टू रूट फाइव बाई फोर। सिमिलरली मिडिल टर्म क्या होगा, 1 प्लस रूट फाइव इंटू 1 माइनस रूट फाइव विच इज 1 स्क्वायर माइनस रूट फाइव का स्क्वायर विच इज 1 माइनस फाइव बाई फोर। नाउ सिंप्लीफाइंग एंड टेकिंग एलसीएम एज 4, सो ऑल द टर्म्स का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा, विच इज 5 प्लस 1 6, 6 प्लस टू रूट फाइव प्लस अगेन 6 माइनस टू रूट फाइव। ओके, और यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस फाइव विच इज माइनस, एंड होल डिवाइडेड बाय एलसीएम इसका क्या है, 1 बाई फोर। सो क्या आ जाएगा, ये टू रूट फाइव गॉट कैंसल्ड एंड 6 प्लस 6 इज 12, 12 माइनस 4 इज 8, सो 8 बाई 4 विच इज 2। सो हमें F3 क्या आया, थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस F3 इज इक्वल्स टू 2। फर्स्ट टर्म आ गया 1, थर्ड टर्म आ गया 2। अब हम निकालेंगे सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, F2 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा माइनस बीटा। ईच एंड एवरी टर्म निकालेंगे, कुछ टर्म्स प्रीवियस टर्म निकालने से हमें उसका रेकरेंस रिलेशन पता चलेगा। तो क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज व्हाट, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा माइनस बीटा एज इट इज अल्फा माइनस बीटा। सो अल्फा माइनस बीटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गॉट कैंसल्ड, वी आर लेफ्ट विथ अल्फा प्लस बीटा। सो सेकेंड टर्म क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा का क्या है, 1 प्लस रूट फाइव बाई टू, पुट करो 1 प्लस रूट फाइव बाई टू प्लस बीटा क्या है, 1 माइनस रूट फाइव बाई टू। सो 1 प्लस रूट फाइव बाई टू प्लस 1 माइनस रूट फाइव बाई टू क्या आ जाएगी, ये रूट फाइव माइनस रूट फाइव गॉट कैंसल्ड एंड वी आर लेफ्ट विथ 1 प्लस 1 2 बाई टू विच इज 1। ओके, सो सेकेंड टर्म भी आ गया 1, फर्स्ट टर्म F1 आ गया 1, सेकेंड टर्म आ गया 1। सिमिलरली थर्ड टर्म ऑलरेडी वी फाउंड आउट, थर्ड टर्म कितना निकला था हमारा, F3 इज इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर 3 माइनस बीटा टू द पावर 3 बाय अल्फा माइनस बीटा। पता निकला था ना, अल्फा टू द पावर 3 माइनस बीटा टू द पावर 3 बाय अल्फा माइनस बीटा, ऑलरेडी वी फाउंड आउट एज 2। ओके, F1 is 1, F2 is 1, F3 is 2 एंड F4 इक्वल्स टू क्या होगा, सिमिलरली n के जगह 4 पुट करो, अल्फा टू द पावर 4 माइनस बीटा टू द पावर 4 बाय अल्फा माइनस बीटा, विच कैन बी रिटन एज
अल्फा टू द पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बीटा टू द पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा माइनस बीटा. Again, it can be simplified further as alpha square plus beta square into alpha plus beta into alpha minus beta. और यहाँ से नीचे का टर्म अल्फा माइनस बीटा गॉट कैंसल्ड. ओके, अल्फा माइनस बीटा और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कैंसिल हो गया. सो हमारा कितना आया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा. ओके, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा. अल्फा के जगह 1+√5/2. सिमिलरली बीटा के जगह 1-√5/2. So, like the previous question, like in F3, what we have done, not question, the bit F3. So, alpha square 1+√5/2 plus 1-√5/2, okay, into, so into 1+√5/2 plus 1-√5/2, which is alpha plus beta. So, ये टर्म कितना आएगा? 1/4 plus 1-√5/4, ये टोटल आएगा 3, क्योंकि फर्स्ट 1+√5 होल स्क्वायर बाई 4, ये टर्म आएगा 3 और सेकंड टर्म आ गया 1. नाउ सिमिलरली F5 निकालेंगे. ओके, F5 क्या होगा? अल्फा टू द पावर 5 माइनस बीटा टू द पावर 5 बाय अल्फा माइनस बीटा. तो सिमिलरली यू फाइंड आउट, ये आएगा हमारा ये आएगा 5. ओके, क्योंकि ये समेशन हम देख रहे हैं, प्रीवियस टू टर्म्स का सम हो रहा है. सो ये आएगा 5. सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट. ओके, ये एक नोन सीक्वेंस है, उसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस. फिबोनाची सीक्वेंस से ये रिकंसिलिएशन कैसे आएगा, वी विल सी लेटर. सो नाउ F1 क्या आ गया हमारा? 1. F2 क्या आ गया हमारा? 1. F3 क्या आया? दैट इज 2. F4 क्या आया? दैट इज 3. एंड F5 क्या आया? दैट इज 5. एंड सो ऑन. सो हम अगर क्लियरली देखें कि F1 आ गया हमारा 1, F2 आ गया 1. सो अगर देखें कि F3 क्या आया? F3 इज F2 प्लस F1. F3 इज नथिंग बट F2 प्लस F1, मतलब प्रीवियस टू टर्म्स का समेशन ही तो आया. और F4 क्या आया? F4 आया 3 विच इज 2 प्लस 1 विच इज F3 प्लस F2 वी कैन राइट. सो प्रीवियस टू टर्म्स का समेशन ही तो आया F4. ओके, सिमिलरली F5 देखते हैं. F5 क्या आया? 3 plus 2 which is 5, so which is F4 plus F3, previous two terms का summation, and so on. So we can clearly observe that Fn will be the sum of previous two terms, which is Fn minus 1 plus Fn minus 2. और ये कहाँ से हो रहा है? n greater than equals to 3. So from this we can check that bit 1, which is Fn equals to Fn minus 1 plus Fn minus 2 is correct. And so Fn equals to Fn minus 1 plus 2 Fn minus 2 is incorrect. So bit 1 correct है, bit 3 is incorrect. Similarly अब देखेंगे कि P of 7 क्या होगा. P एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2 दिया हुआ है और उसका 3 टर्म्स भी दिए हुए हैं. अब देखेंगे कि P of 7 क्या होगा. ओके, P of 7 निकालने के लिए हम P of 1 क्या दिया हुआ है लिखते हैं. ओके, सो P of 1 equals to F1, P of 3 is equals to F3 and P of 5 equals to F5. So P of 1 क्या है? F1. F1 already we found out, that is 1. P of 3 क्या है? F3. F3 also we already found out, which is 2. And P of 5 is equals to F5, which is 5. Okay, F5 which is 5. So तीन टर्म हमें दिए हुए हैं, polynomial of degree at most 2 it is written. So what we will do, अगर डिग्री एट मोस्ट 2, अब देखेंगे F6 क्या होगा. सिमिलरली 5 plus 3 is 8. F7 क्या होगा? विच इज 8 plus 5 which is 13 एंड सो ऑन. क्योंकि हमें F7 यहाँ P5 is equals to F5. सिमिलरली what is P7? P7 equals to what? ओके, सो हम क्या करेंगे? पॉलिनोमियल लेंगे P of n of degree at most 2, because it is given that P of n is the polynomial of degree at most 2. So P of n is equals to a plus a is a one coefficient, a plus bn plus cn square. So it is a polynomial of degree at most 2 up to 2 degree polynomial. So a plus bn plus cn square. अब क्या करेंगे? उसका वैल्यूज दिया हुआ है. फर्स्ट वैल्यू क्या दिया हुआ है? P of 1 equals to F1 and F1 is nothing but 1.
So P of 1 equals to 1, just put in place of n, we'll put 1. So A plus B plus C is equals to 1. So equation number 1 will mark. Similarly, second value of P is given as P of 3 is equals to F3. And what is F3? Already we found out as 2. F3 is equals to 2 because F1 equals to 1, F2 equals to 1, and F3 is equals to 2. So in place of n, we'll put 3. So A plus 3B plus 3 square C, which is 9C, is equals to 2. So ये हो गया second equation. Okay. Third equation will be P of 5 is equals to F5. So if P of 5 equals to F5, so what we will get? F5 is nothing but 5. So what we'll get, equation in place of substituting n equals to 5 is A plus 5B plus 25 C is equals to 5. So these three equations and three unknowns. So we will solve these three equations to get the three unknowns A, B and C, and then substitute in P of n, we'll get the required polynomial and we'll get the value of P of 7 by putting n equals to 7. Okay. So we'll solve these three equations. So for from first equation, what we get? A plus B plus C is equals to 1. So if A plus B plus C equals to 1, A is equals to 1 minus B minus C, implies A is equals to 1 minus B minus C, and then we'll substitute this value of A in remaining two equations to get the value of three unknowns. So A is equals to 1 minus B minus C. Okay. So in the second equation, that is first equation we have substituted. Now in second equation we'll substitute the value of A is equals to 1 minus B minus C. Directly substituting in P of 3 equals to F3, what we'll get? 1 minus B minus C plus 3B plus 9C is equals to 2. And from that, what we'll get? 3B minus B is equals to 2B, and 9C minus C is equals to 8C. So 2B plus 8C, and 1 will get shift to another side, we'll get 2 minus 1 is 1. So this is our fourth equation we can write as. Similarly, from third equation, what we'll get? Similarly, substituting value of A is equals to 1 minus B minus C, we'll get directly 1 minus B minus C, because first value is A, plus 5B plus 25C is equals to 5. So 5B minus B is equals to nothing but 4B, and 25C minus C is 24C. And so we can write 4B plus 4B plus 24C is equals to 4, because 1 will shift to right hand side, 5 minus 1 is 4. And if we'll take 4 common, then we'll get B plus 6C is equals to 1. B plus 6C is equals to 1. This is our fifth equation. Now solving these two equation, we'll get the value of B and C, and then substituting in A, we'll get the value of A. So A, B, C. So we'll write the remaining two equations, that is 2B plus 8C is equals to 1, and B plus 6C is equals to 1. So now what we will do? This is equation number 4 and this is equation number 5. We'll solve these two equations to find the value of the unknowns B and C. Fifth equation to 2, what we'll get is first equation is 2B plus 8C equals to 1. Second one is 2B plus 12C is equals to 2. Just subtract both the equation. What we'll get? 2B get cancelled. 8 minus 12 will be minus 4 is equals to 1 minus 2 is minus 1. C is equals to 1 by 4. So if C equals to 1 by 4, we'll find the remaining two B and A. Similarly, so now we'll get the value of B and A. So B is equals to what? B plus 6C is equals to 1. So putting C is equals to 1 by 4, what we'll get? B is equals to 1 minus 6 by 4, which is 4 minus 6 minus 2 by 4, which is minus half. Similarly, A is equals to what? A is equals to 1 minus B minus C. B is equals to minus half and C is equals to 1 by 4. So B is equals to plus 1 by 2 and C minus 1 by 4, which is equals to nothing but 4 minus 4 plus 2 minus 1 by 4. 4 plus 2 is 6 minus 1, 5 by 4. Just substituting the value of A equals to 5 by 4, B equals to minus half and C is equal. So we get by putting this A is equals to 5 by 4, B is equals to minus half and C is equals to 1 by 4. Just put in P of n.
So P of n equals to a plus bn plus cn square. So what we'll get? P of n is equals to a plus bn plus cn square. Okay, so a is 5 by 4, b is minus 1 by 2, so minus 1 by 2n, plus c is 1 by 4n square. So just simplifying more further by putting n equals to 7, what we'll get? So putting n equals to 7, so P of 7 is equals to 5 by 4 minus 1 by 2 into 7 plus 1 by 4 into 7 square, which is 49. So again, what we can write? 5 by 4 minus 7 by 2 plus 49 by 4. And if we'll take LCM as 4, what we'll get? LCM as 4 is 5 plus 14, minus 14 plus 49 by 4. And if we'll substitute, we'll simplify, what we'll get as 40 by 4, and which is nothing but 10. Okay, so we'll get P of 7 is equals to 10. So fourth option is correct, and second option is incorrect. P of 7 equals to 10. Now, after knowing all this answer, we know what is f of n, fn. The sequence which we got here is nothing but a known sequence called Fibonacci sequence. Okay, it's called the Fibonacci sequence fn, and it will satisfy the recurrence relation that any of its term greater than equals to 3, f3, it will be the sum of its previous two terms, and it is given by this alpha to the power n minus beta to the power 1 by alpha minus beta. So how it comes, how this formula alpha to the power n minus beta to the power n by alpha minus beta is derived, we'll see now. It's a very well known sequence. So fn is equals to fn minus 1 plus fn minus 2 is what we got the recurrence relation of this sequence. So after getting the recurrence relation of this sequence, how to solve this recurrence relation? Or it is a difference equation. We can convert this difference equation as a quadratic form, that is x square minus x minus 1 is equals to 0. We can write this in this quadratic form because it is second order. So up to degree 2 it will go. Okay. So after getting this quadratic equation, we can solve x equals to minus b plus or minus square b square minus 4ac by 2a by putting that formula ax square plus bx plus c equals 0. In that formula, x equals to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a, and from which we got 1 plus or minus root 5 by 2. And 1 plus root 5 by 2 is what? This golden ratio. Okay. Now fn equals to, we can write, this is a difference equation. After getting this x equals to this, we can write some constant into first 1 plus root 5 by 2 to the power n plus some other constant into 1 minus root 5 by 2 to the power n. Two roots we can write in this form. Okay, this is the solution of a difference equation. And after finding a and b, we can write the entire solution. Okay, how to find this constants capital N capital B? From this f0 equals 0 and f1 equals to 1. So f0 equals to 0 will give us a plus b is equals to 0, because to the power n, if we put 0 it will be 1. So a plus b is equals to 0, from which we get a equals to minus b. Similarly, f1 equals to 1 will give you a, right hand side will be 1 plus root 5 by 2 to the power 1 into a. So a into 1 plus root 5 by 2 to the power 1, and b is b into 1 minus root 5 by 2 to the power 1. Now from previous one we got a equals to minus b, we can directly substitute b is equals to minus a. So minus a into 1 minus root 5 by 2. From here what we'll get? Common, a will take common and we'll get root 5, because 1 plus root 5 minus 1 plus root 5, which is 2 root 5 by root 5, which is root 5. And a is nothing but 1 by root 5. Similarly, a equals to minus b. So what we'll get as b? If a equals to minus b, b equals to minus a. So b equals to minus 1 by root 5, from which we got the two constants, which are a is equals to 1 by root 5 and b equals to minus 1 by root 5. Now just we'll substitute these two values in this equation, that is fn, from which what we'll get? Fn is equals to 1 by root 5 into 1 plus root 5 by 2 to the power n, and b equals to minus a. So what? 1 by root 5 will take common, 1 plus root 5 by 2 to the power n minus 1 minus root 5 by 2 whole to the power n whole divided by root 5,
because 1 by root 5 is common and b equals to minus a, so minus sign is there. So if we'll take alpha equals to 1 plus root 5 by 2 and beta equals to 1 minus root 5 by 2, we can convert this into this form. Okay, so this is how we got fn equals to alpha to the power n minus beta to the power n by alpha minus beta. So if you like the video, please like, share and subscribe.